करता हूँ. Hi guys, this is Rohit Sharma. I'm the National Law University of Smartkeeda.com, and today we are going to have a very short class on the most important doctrines related to contract as well as the other laws. So as you can see on the screen, that the first doctrine, that the first maxim, the first word, the term which comes in our screen is ab initio. That means right from the very beginning. To those people who are our subscriber, we will be sending the document by a PDF mode. So ab initio means right from the very beginning. So if a contract, let us say that you do a contract with a minor, that means ab initio contract. So void ab initio. So it is used in this sense that आपका जो contract है वो शुरू से ही void था, ठीक है. तो अगर आपका शुरू से ही वो void है तो बाद में वो valid नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी जो starting point था वो ही खराब था वहां पे, ठीक है. अब ab initio void क्या नहीं होता है. लेट अस से coercion का कोई अपना coercion से किसी ने contract कराया है, या किसी ने by mistake हो गया है contract, या फिर let us say अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है. उसमें पार्टी का डिपेंड करता है, अपना मर्जी होती है जिस पार्टी के साथ वो जिसे कह सकते हैं मिस्टेक हुई होती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होता है जिस पार्टी पे, जो पार्टी कोर्स्ड हुई होती है वो डिसाइड कर सकती है कि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, तभी उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. बट मोस्टली दिस फर्स्ट वर्ड ab initio इज यूज्ड इन द केस ऑफ void ab initio, right? Void from the very beginning. The act is serious. This is the physical act of the crime. It is a part of what proves criminal liability. Fraud के केसेस में मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जैसे आपने सिविल में किसी का फ्रॉड किया है, तो उसके साथ अगर क्रिमिनल उस पर सेक्शन लगाना हो 420 का, धोखाधड़ी का, तब वहां पे ये यूज होता है कि एक्ट ऑफ फिजिकल क्राइम है. लेट अस से कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं किसी के साथ. मेंस ये है कि आपका मन है उसके साथ धोखाधड़ी करने का, ठीक है. जब दोनों चीजें मिलती हैं कि आपके मन से भी आपकी भावनाएं गलत हैं और आपके एक्ट भी क्राइम का किया है, तो वहां पर फिर वो पूरा का पूरा एक क्राइम बनता है, ठीक है. सो लेट अस सी कि मैं गलती से किसी को घोड़ा वो व्हाइट मांगता है और मैं गलती से वो क्रीम घोड़ा दे देता हूँ. मुझे लगता है कि मेरे माइंड में है कि वो वही व्हाइट घोड़ा है, तो वो मुझ पर फिर 420 का केस नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि सर हमारे पास व्हाइट घोड़ा एक ही था, आप यही जो आपको हमारे एजेंट ने, जो आपके एजेंट इंफॉर्मेशन लेके गया वो इसी को हमने व्हाइट बताया था, तो वो बोलेगा कि नहीं ये तो क्रीम घोड़ा है. तो यहाँ पर तो देखो एक मिस्टेक हो रही है, फ्रॉड नहीं हो रहा है. लेकिन लेट अस से कि मैं ब्लैक घोड़ा भेज देता हूँ उसको व्हाइट बोल के, जानबूझ के. मुझे पता है कि he has asked for the white one and I am sending a black one or with the spots, then there is a fraud which is going to happen. So in this case there is no relief, and actus reus and the mens rea both are complete. Ad hominem, attacking an opponent's character rather than answering his argument, which is very visible in today's newsrooms. वहाँ पर है कि rather than answering the argument, it's like the Arnab Goswami show or any other show in which shouting is going on. All the other news channels also follow him because he has the highest TRP. So ad hominem is like you attack an opponent's character rather than answering his argument. ये normally court में allow नहीं किया जाता, personal attacks. Affidavit is a written statement confirmed by oath or affirmation for use as evidence in the court. If your affidavits are wrong, then you can be charged for perjury. Perjury means giving false evidence in the court. Animus possidendi. This is an intention to possess, sometimes called animus possidendi. इसको वही बोलते हैं. If the other component of possession, देखो दो तरीके की possessions होती हैं. एक physical possession होती है और एक mentally आप possess करते हैं किसी चीज को. सो मेंटल पोजेशन भी जरूरी होती है, और कॉमन लॉ कंट्रीज यानी कि इंडिया, ब्रिटेन, मैंने आपको पहले ही कराया था, कॉमन लॉ कंट्रीज के अंदर पोजेशन, राइट टू इंटेंशन टू पोजेस अ थिंग इज अ फैक्ट. सो इसके अंदर आपका एनिमस पोसिडेंडी आता है. कॉर्पस पोसिडेंडी होता है टू हैव द फिजिकल ऑब्जेक्ट इन योर हैंड, बट एनिमस पोसिडेंडी होता है कि इंटेंशन टू पोजेस है मेरे पास, मतलब मैं ही इस प्रॉपर्टी को भोग रहा हूँ, ये मेरे को पता है और मेरी ही है, ये इंटेंशन है. डायरेक्टली चाहे आप वहां पर हैं या नहीं है, ठीक है, तो इंटेंशन होता है पोजेस करने का. सो लेट अस गिव यू अ केस कि अगर लेट अस से कि ए और बी है, ए ने बी की जगह के ऊपर जाके घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब बी आया ही नहीं, 12 साल से ऊपर का टाइम हो गया, तो कोर्ट बोलेगा कि आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी उस प्रॉपर्टी को रखने की. एडवर्स पोजेशन के थ्रू फिर वो दूसरे को चली जाती है, क्योंकि उसका कॉर्पोरियल पोजेशन भी होता है और इंटेंशन भी होता है उसको पोजेस करने का. आपके पास दोनों ही नहीं है ना, कॉर्पोरियल है और 12 साल तक आपने अपनी प्रॉपर्टी की सुध बुध नहीं रखी.
इसलिए लोग अपने घरों के आसपास बाउंड्रीज लगाते हैं और पोल्स खड़े करते हैं और उसको जाली बना देते हैं जब अगर फार्म लैंड्स होती हैं या फॉरेस्ट लैंड्स होती हैं. Bonafide means in good faith. That means that you are doing things in good faith. Let us say that bona fide apna de do certificate, character certificate. Most of the people who will be going out for college admissions, they will be asked for giving a bona fide. Caveat means a warning. This is filed actually in a court. Civil court में फाइल होती हैं ये. अगर petition भी कहते हैं इसको 90 days तक का होता है कि कोई भी केस अगर चले तो प्लीज मुझे बता दिया जाए, वार्निंग दे दी जाए. Caveat का मतलब ये होता है. Sine qua non का मतलब है indispensable, essential action, condition और ingredient. इसके बिना कुछ हो नहीं सकता. So let us say consideration is a sine qua non thing for making a contract. ठीक है. De jure, it means something that is established in law, whether or not it's true in general practice concerning the law. So let us say de jure or de facto. तो de facto होता है, let us say कि the UPA 2. So de facto the rule is of Sonia Gandhi because she controls all the shots. But de jure the rule is of Manmohan Singh. So by law Manmohan Singh is the prime minister, but by the fact of the things it is Sonia Gandhi who calls the shots. De minimis, it means the law does not concern itself with trifles. तो यहाँ पर इसका मतलब बहुत सिंपल है. इसका मतलब है कि लॉ जो है वो छोटी मोटी चीजों के साथ अपने आप को कंसर्न नहीं करता. अब लेट अस से कि मैंने पिन ली अपने एक स्टूडेंट से और मैंने उसको पिन वो वापस नहीं दी, नॉर्मल पिन है 2 रुपए की, तो उसके ऊपर वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता जाके कि मुझे वो पिन आप वापस दे दो. बिकॉज अगर यही केस मसले देता रह गया तो कोर्ट फिर यही काम करता रह जाएगा. लेकिन हाँ, अगर वो पिन डायमंड स्टडीड है या गोल्ड स्टडीड है, देन इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग. Or it is an antique value. Let us say that that pin has been used by Subhash Chandra Bose, or it carries this historical significant value. Then it is obviously it's not a trifle. So the court will interfere in that. Voluntary non-fit injury, and injury is not done to one that consents to it. So let us say it comes in very importantly in the legal principle questions. It comes that let us say that you have gone to see a match between India and Australia in the Mohali cricket stadium, and a ball hits you while you were looking away. So you will not be entitled to any compensation because you have voluntarily submitted yourself to any injury caused by the sport. Hitting sixes is a part of the sport, and you have voluntarily exposed yourself to that injury. It also happens in the case of F1 Formula racing as well as the other races too. Let us say horse racing or any kind of injury that happens as far as the old law is concerned. State decides to stand by decisions. So जो subsequent पहले वाले decision होते हैं उसके ऊपर subsequent tribunals same decisions पे चलते हैं until unless it is overruled by a higher court or a bench which is larger in strength. So let us say a 3-judge bench has given a decision on a principle of law. So a 1-judge bench or a 2-judge bench will have to follow it. But if let us say 7-judge bench is formed, 9-judge bench is formed on the same decision and they overturn that decision, then they are not bound by the stare decisis because that was the earlier decision was only given by a 3-judge bench court. What a person cannot do by himself, he cannot do through another person. Quod per me non possessum, nec per alium. तो जो एक्ट डेलीगेट नहीं हो सकता है वो आप उसमें आप एब्जॉल्व हो पाते हो. This makes a principal liable for the acts of his agent. Similarly, if a person induces someone to commit an offense, such person is also liable. ठीक है. तो अगर मान लेते हैं कि आप खुद गाड़ी किसी के ऊपर नहीं चढ़ा सकते हो तेज चलाते हुए, तो आप अपने ड्राइवर को भी नहीं बोल सकते कि 200 किलोमीटर पर आर पे गाड़ी चलाओ. अगर आपने डायरेक्ट उसको कमांड दिया हुआ है और ड्राइवर ये बात कबूल लेता है कोर्ट के अंदर, तो यू विल आल्सो बी चार्ज अंडर द रैश ड्राइविंग एक्ट बिकॉज ड्राइवर इज योर एजेंट. ठीक है. नॉर्मल केसेस में इफ द ड्राइवर्स ओन मिस्टेक इज देयर और ही एक्सेलरेटेड विदाउट द पर्सनस कंसेंट, देन ही विल बी एंटाइटल्ड टू सिविल कंपनसेशन फ्रॉम द ओनर and criminal case will be lodged against the driver. But if there are explicit instructions from the owner that kindly have to reach the airport, Chandigarh airport from Shimla, kindly drive at 150 km per hour, and a person is trampled down by the car, or let us say if the car hits the person or the person sleeping on the pedestrian, so that person will be entitled to compensation as well as a criminal case can be filed against the owner. Pacta praevitia jurio publico non derogare posento. A private contract cannot derogate from the law. तो आप अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं तुम्हें 10 किलो हशीश दूंगा या हैश दूंगा, तो वो लॉ के खिलाफ ही है.
no matter how much you like the actor Deepika Padukone or Sara Ali Khan, if they have taken the drugs in private consumption, that is also against the law. Okay, that's the problem. That's the problem where it comes out to be. Nemo debit esse judice in properia causa. No one can be a judge in his own cause. So the peculiar case of this was Ranjan Gogoi, a female in his court accused him of sexual misconduct, and he was the judge in his own case. So that's there should be a non-biased person should be the judge of the matter. He should not be a biased person, or he should not be involved in the matter. Audio alterum partem, this is a very famous case. You have to give a decision only after hearing the other side. जरूरी नहीं कि आप सुनो उसको, कभी कभी नोटिस मांग लिया जाता है या रिटर्न में उसकी सबमिशन मांग ली जाती है एम्प्लॉय की, या हियरिंग हो रही होती है, तो उसके बाद ही आप कर सकते हैं. सिंगुलरली अपना डिसीजन आप डिक्टेटर की तरह नहीं दे सकते हैं. Ignorance of fact excuses, ignorance of law does not excuse. So ignorance of fact आपको excuse करती है, ignorance of law does not excuse. So let us say कि आपको दोनों पार्टीज को पता नहीं था कि हाँ जी शिमला में आपका कोई घर है भी या नहीं है, तो उस केस के अंदर लेट अस से दे डू अ कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोथ पार्ट्स पे होगी, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हो गया, तो फिर उस केस के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, पार्टीज इग्नोर एक्सक्यूज कर दी जाएंगी. लेकिन लेट अस से दूसरा केस ये है, आपका इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर से गाड़ी चला रहे हैं आप, और आप एक प्रोहिबिटेड रोड पे चले गए, और आपने वहां पे जाने के बाद आपने बोला अरे मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड रोड है, तो दैट वोंट काउंट बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट नो एक्सक्यूज, बिकॉज एवरी सेकंड पर्सन विल बी टेकिंग दैट एक्सक्यूज. आई डोंट नो, अच्छा यहाँ पे ऐसा फाइन लगता है, ओ आई डिडंट नो. सो अटल टनल है, अभी लॉन्च हुई थी और इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, तो अब इस पे आर्टिकल सेक्शन 144 सीआरपीसी के थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगाए हैं. So you should know it before entering the tunnel, because you are entering a very different kind of a space, and if you don't know it, then you cannot claim it later that I did not know the law at that point of time after breaking the law, of course. De minimis lex non curate, I think ये मैं हम cover कर चुके हैं, repeat हो गई है इसके अंदर, so I won't be wasting time with it. Contra non valentem agri nulla curate price crypto, no prescription runs against a person not able to act. ठीक है. प्रिस्क्रिप्शन इज अ ब्रांच ऑफ लॉ दैट लिमिट्स द टाइम विद इन व्हिच अ पर्सन कैन मेक अ क्लेम. तो आपने जैसे मान लेते हैं किसी को कोई लोन दिया है, तो उसका 3 साल का टाइम होता है, आप रिकवर कर सकते हैं. ये नहीं कि आप 40 साल के बाद आ रहे हैं, आपकी मैंने आपको 1 लाख रुपए लोन दिया था, प्लीज मुझे वो वापस दे दो. और जैसे इसमें लिखा हुआ है अंडर इंडियन लॉ दिस इज प्रोवाइडेड अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963. बाय अनेबल टू एक्ट का मतलब है लेट अस से कि आपने लोन दिया किसी को और वो बंदा पागल हो गया, 2-3 साल के लिए उसको पागल पानी खाने घोषित कर दिया गया, तो उसके खिलाफ कोई भी उस टाइम पे लिमिट नहीं चलेगी लिमिटेशन की, क्योंकि आप तो मांग ही नहीं सकते थे उससे पैसे. लेकिन जैसे ही वो ठीक होगा तो वापस से लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम से. तो लेट अस से वो 10 साल के लिए पागल हुआ, अब 10 साल के बाद ठीक हो गया, आ गया, अब उसका टाइम उसी 11वीं साल से 12वें साल 13वें साल तक चला, आपका जो पैसा उसने लिया हुआ था. Ubi just ibi remedium, this translate as there is no right without remedy. This means that if there is right for the violation of which the law is not prescribed remedy, then that right really does not amount to a real right at all. जहाँ पे भी देखो, जहाँ पे भी लॉ होता है वहाँ पे राइट होती है, रेमेडी होती है जहाँ पे भी रॉन्ग हुआ होता है. तो देयर इज नो राइट विदाउट अ रेमेडी. अगर आपका राइट है, मान लेते हैं कि लेट अस से दैट यू कैन हैव 10 you can have the information from the public information officer of a state university or any state government officer, और उसके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं दी हुई है. लेट अस से कि कुछ प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई टाइम उसके जो ऑफिसर है उसको कुछ बोला ही नहीं गया कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता अगर तुम ना भी दो, तो वो राइट रहेगा ही नहीं, वो तो उसकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी. तो राइट वो तभी है जब उसके खिलाफ एक रेमेडी होगी. अगर वो नहीं देता है तो 30 दिन के अंदर अंदर उस पर फिर जुर्माना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसके पास जाना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं दिया, क्या रीजंस रहे हैं, एंड ऑल दिस स्टफ. टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग अ लीगल रीजनिंग सीरीज for Smartkeeda. There will be class every day on the legal reasoning, and same questions will be available in the sectionals of the test series that will be provided by Smartkeeda for the year 2021 as well as the year 2022. I'm very happy to announce that we are coming with a new site also for dedicated for CLAT preparation, AILET preparation, SLAT preparation, and all the other regional law entrance examinations. The site will be available, I think, in the auspicious time of Navratras. So we'll be making the site link available to you. Thank you very much for joining with Smartkeeda. This is Rohit Sharma.
and we will be having a daily class from right now, these days onwards. Okay. Thank you very much. Thank you.